सो उसको शुरू करते हैं। मैं प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ अपनी। ये मेरा जुपिटर का एक बेसिकली विंडो खुली हुई मेरी जस्ट मीन सेफ साइड। मैंने शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा स्ट्रिंग्स। पाइथन में स्ट्रिंग बेसिकली कहते हैं टेक्स्ट को। इट्स अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, टर्म्स, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, व्हाटएवर वी हैव। लाइक इन दिस प्रेजेंटेशन, जो हमारी प्रेजेंटेशन जो आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल बेसिकली स्ट्रिंग। इट कैन बी क्लासिफाइड एज अ स्ट्रिंग। सो इन पाइथन जब हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, बेसिकली वी यूज़ कोटेशन मार्क्स. इट कैन बी डबल कोड, इट कैन बी सिंगल कोड. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई नंबर या वैल्यू देना किसी चीज़ को, जैसे अबू बकर इक्वल्स फर्स्ट खलीफा, राइट, फर्स्ट खालिफ. सो इफ आई से प्रिंट अबू बकर, इट विल जस्ट प्रिंट अबू बकर एज फर्स्ट खालिफ. सो लेट्स ट्राई दैट इंशाल्लाह. सो अगर मैं लिखूँ अबू बकर इक्वल्स फर्स्ट खलीफा, ऐसे प्रिंट अबू बकर. When I run it, let's say first Khalifa or first Khalif. So this is like, this whole thing is basically a string, right? This is what we do, inshallah. So just wanted to give you a little bit of introduction. So now अब हम ज़रा jump करते हैं इसमें और detail में जाने के लिए inshallah. Let's move on to the next one. Creating strings continued. Now एक चीज़ याद रखिएगा कि it has to be consistency is the key in programming language. जैसे कि अगर आप एक डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन करें, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट. अगर आपने, इट विल थ्रो आउट एन एरर मैसेज. टू शो यू एंड गिव यू एन एग्जांपल, हम वापस अपनी स्क्रीन पर आएँ. अगर मैं यहाँ पर डबल कोटेशन लगाता हूँ, देन आई रन इट, इट विल गिव मी एन एरर मैसेज. अगर मैं यहाँ पर डबल कोटेशन लगाऊँ एंड देन रन इट, इट विल रन द प्रोग्राम राइट. सो इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज़ द की इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जब आप अपना स्ट्रिंग या अपना जब सिंटैक्स लिख रहे होते हैं, यू नीड टू मेक श्योर के उसमें कंसिस्टेंसी हो इंशाल्लाह. Now, syntax and syntax error messages. Like syntax mean the arrangement and order of the words in a sentence. Like, and syntax error means that you did something in an order Python was not expecting, missed something. Like for example, this is a whole syntax, right? Now, अगर इसमें मैंने गलती की, मैंने single quote miss कर दिया है, that's why it's picking up कि भाई end of the line while scanning string literal कि यहाँ पर एक चीज़ missing है, and it's pointing me कि भाई यहाँ missing है, right? So eval means end of the line. So Python की खास बात यह है कि it will show you कि कहाँ error message आ रहा है और किस तरीके का error message है. Like for example, I'm back over here. If I make a mistake, put a single quote, it will show me end of the line while scanning कि यहाँ पर आपका जो syntax है गलत है, syntax error. This whole thing is basically a syntax, right? That's how we classify it. And then we put it back, and then we run it, it will be all fine. Now, adding a second line to your command. If you want to add a second line to a command, you have to keep it consistent, right? So you can use 3 single quotes to write a second or third or as many lines as you want to keep given. Like, अगर आपने एक से ज़्यादा lines लिखनी है, you have to make sure कि आप single quotes जो हैं वो different तरीके से इस्तेमाल करें. Let me show you some examples, inshallah. जैसे कि अगर मुझे अबू बकर फर्स्ट खलीफा लिखा हुआ, ठीक है, अगर मैंने इसमें एक और लाइन ऐड करनी है, एंड ऐसे एक इंटर दबाकर मैंने लिखा अ कंपेनियन, मैं से अ कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम. अगर मैं इसको रन करूँगा, इट विल थ्रो आउट एन एरर मैसेज सेइंग कि भाई व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज नॉट राइट. बट इफ आई डू इट लाइक दिस, इफ आई जस्ट कॉपी द होल थिंग आउट, राइट, एंड आई टाइप इन 3 quotes, then run it, it will be just fine. So we need to understand the order of how to write a proper syntax, inshallah. This is very key. That's the key thing. इसके बाद अगर आप थर्ड लाइन डालना चाहते हैं, वो भी डाल सकते हैं, a good man, and if you still run it, it will still run it. So 3 quotes के बाद you can expand it, a pious man, right? And you run it, and it will keep on picking it up, inshallah. So that's how you do it in Python. कि अगर आपने अपना syntax बड़ा करना है और मुख्तलिफ lines में जाना है, you use 3 single quotes, right? So you type it up, and it will automatically pick it up. So अगर जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ, right, and then I just type in, automatically वो आ जाएगा, and then you start typing in the text over here, and then when you run it, it will show you the proper syntax, inshallah. So the proper output, inshallah. Now let's move on to string problems handling. String problem handling जो है, this is one of the key things, silly string मैंने use किया. He said aren't, can't, shouldn't, wouldn't, print silly string, and then saying कि भाई यहाँ पर बहुत सारे invalid syntax है because you're typing, it doesn't know कि कहाँ से single quote शुरू हो रहा है, कहाँ से double quote शुरू हो रहा है. It's kind of having, it's confusing इसके लिए कि भाई इसको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किस तरीके से मुझे लेना चाहिए इसको. It's having confusion. So to fix this, what we do is, like when Python sees a quotation mark, either a single or double quote, it expects a string to start following the first mark and the string to end after the next matching quotation mark, either single or double on that line. Now over here the confusion is कि अगर मैं ये इसको यूँ यूज़ करूँ triple quote में, then it knows कि हाँ ठीक है सही है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ये sentence खत्म हो रहा है. Then it's going to say, okay, he said and can't, shouldn't, wouldn't. That's not a problem. So if you are writing a complex sentence which has multiple single quotes in there, you have to use a 3
single quote parameter to write it down inshallah. Now again, there are many tips and techniques down the line. For Python primer में हम बहुत basic चीज़ें करा रहे हैं. But down the line, inshallah, as you do Python alpha and Python beta and Python gamma, you will learn more techniques. And by the time you go to Zeta, आप इसमें inshallah master हो चुके होंगे. And then we can talk about cheat tricks and this and that and whatnot. Right now, we are just keeping it as basic as possible, just to make sure कि भाई जैसे छोटे बच्चे को पढ़ा जाता है, सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं कि आपको कोई मसला ना हो उसके अंदर. Adding a backlash or escaping, this is another technique which means yes, I know I have quotes inside my string and I want you to ignore them until you see the end quote. ये एक और टेक्निक है बैकलैश. अब देखें जिसमें अगर मुझे सिंगल कोड के अंदर ही सब चीज़ों को लिखना था, जैसे मैंने पीछे ट्रिपल कोड यूज़ किए थे, तीन सिंगल कोड्स थे, यहाँ अगर मुझे सिंगल कोड में लिखना है तो मैं हर कोटेश सिंगल कोड के आगे डबल कोड मैंने ऐसे शुरू किया है अपने सेंटेक्स को अपने पैरामीटर को लिखने के लिए, लेकिन मैंने इसमें बैकलैश यूज़ किया और स्केपिंग यूज़ किया. दैट मीन्स कि आप इसको प्लीज़ इग्नोर कर दें एंड कीप ऑन डूइंग दैट. एंड इफ आई डू दैट देन आई विल गेट द result as he said, aren't, can't, shouldn't, wouldn't, will not be a problem inshallah. So that's how you do it. You have to keep it as simple as possible. There are ways of like backslashes, escaping methods, so on and so forth. Right now आप चाहें तो आप ट्रिपल कोड यूज़ करें, ट्रिपल कोड्स यूज़ करें, या फिर आप चाहें तो सिंगल कोड यूज़ करें. बट देन इफ़ यू वांट टू यूज़ सिंगल कोड देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू यूज़ द बैक स्पेसिंग एज वेल. नाउ अगेन इसका एक और तरीका ये भी कि अगर आप सिंगल कोड यूज़ करेंगे तो आपने सिंगल कोड स्ट्रिंग के अंदर आपने तमाम आरंट, शुडंट, कांट, इन सब के अंदर आपको बैक स्पेस यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर सिंगल कोड आ रहा है. अगर आप डबल कोड यूज़ करेंगे देन यू कैन जस्ट लॉक इट डाउन सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले, देन यू कैन जस्ट सिंपली लॉक इट डाउन शुरू में आपने यहाँ कर दिया. लेकिन अगर आप ट्रिपल कोड यूज़ करते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल. So it's not like as if कि मैं Python जो language है, it's a kind of snake, right? It's not like this is like a king cobra right now, but it's not like as if कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और हम सब पढ़ रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. This is just like a simple way of having some giggles. But inshallah we will jump into our core class. So जैसे हमने पीछे example में देखा. So try to practice these examples at home. You will have the notes and type them in inshallah, and you will get the hang of it inshallah. Now embedding values in a string. This is again a very key thing. हमने पहले स्ट्रिंग से शुरू किया, स्ट्रिंग में सिंगल कोड, डबल कोड, एंट्रिप लेकर आए, सिंगल कोड्स लेकर आए. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इसमें वैल्यू किस तरह एम्बेड करते हैं. एम्बेडिंग फॉर एग्जांपल टू हैव पाइथन कैलकुलेट और स्टोर द नंबर्स ऑफ पॉइंट्स यू स्कोर्ड इन अ गेम एंड देन ऐड टू अ सेंटेंस लाइक आई स्कोर्ड पॉइंट्स, यूज percentage s in the sentence in place of a value and then tell Python that value like this. Like for example my score is 1000, message हम लिखेंगे I scored basically points as percentage s points. तो print message जब मैं करूँगा it will show me my score 1000 and it will just give me the output as I scored 1000 points. It will pick up basically my score as the indication of 1000. To give you an example, let's try this inshallah on a command line. So let's try this over here. So remember, message my score equals 1000. आपने points लिखे. Message is I scored percentage s points, right? And then print message percent score. And when I run this thing, it will show me I scored 1000 points. This is another way of basically writing down this, giving it a value to the string as well. Now there are other ways of how you can make it much more intuitive as well. So let's go back to the slide and go through those points as well again inshallah. Now this is a very good example जिसमें हम लोग बता रहे हैं कि भाई embedding value in a string और किस तरीके से की जा सकती है. देखिए जैसे कि nums, it's just a syntax where I'm saying what did the number percentage s say to the number percentage s, nice spelled, right? And print nums percent 0 and 8. Basically percentage s जो है that we replace with 0 and 8. So when I run this command, it will give me the answer as what did the number 0 say to the number 8, nice spelled, right? Because number 8 is bearing a belt, right? So when using more than one placeholder, be sure to wrap the replacement value in parentheses. Basically these are the replacement values 0 and 8. So we have to make sure कि जब nums जो पिछली example थी उसमें हम लोग basically simple चीज़ यूज़ कर रहे थे कि percentage s is replaced by my score, message replace this with my score, and that's why it was I scored 1000 points, right? In this example we are replacing percentage s with 0 and 8, and we are defining that कि भाई percentage 0 and 8 will replace the percentage s. So that's basically, but the key thing is कि जब आप इस तरह करें you have to make sure कि भाई आप दो parentheses के अंदर close करें. The order of the value is the order in which they will be used in the string. अगर मैं लिख दूँ 8 and 0 तो then it will come as 8 and 0, but since मैंने order जो लिखा था 0 and 8, then it is coming out as 0 and 8. So you can run this thing on your end to make sure कि भाई you are able to get this result inshallah through the notes. Another way of multiplying string is basically multiply आराम से कर सकते हैं. When you print 10 multiply by a and you will get 10 times a. That's how you can get it, right? So if you multiply the 10 multiplied by 5, the answer is 50, right?
But what if like 10 multiplied by a करेंगे तो it will just print a 10 times, right? So you can run this thing on your side to see what result you will get inshallah, and you will get this result. ये जो मैंने create किए हैं बॉक्स जो figures लगाए हैं presentation में, basically ये मैंने commands run करके उनको easily आपके लिए किया हुआ. So you can get these things from the notes. जब आप इसमें देखें, you can run these things. जो नीचे आपको box के जो grey box के जो नीचे नजर आएगा, that will be the result, right? Somehow you know you will be able to see these things clearly inshallah. Similarly अगर मैं यहाँ पे लिखूँ print 100 into vessel, right? And it will just keep on printing me. Oh, wait a minute, there's a mistake. Yep, the mistake is I forgot to put this into single quotes. Now it will recognize, and now you see. Now you can also clean this and make it as al nafay or a, and it will just say, or you can just say इसमें आप al nafay लिख दें, it will keep on printing it 100 times. If you do it 1,000 times or 10,000 times, whatever, it will keep on printing that. So we can clear that up. Now we can clear this up just to make it nice and smooth. Make it nice and smooth and clean. Another example जो हमने रखी है, it's like basically creating multiple strings continued. So spaces. Now this is very key. हमने दो single quotes के बाद multiply, यानी कि दो single quote के बीच में space है, हमने multiply किया 25 से कि भाई इतने spaces आप छोड़ें. Print %s12 dha phase 5 percentage spaces. Then print. फिर हमने उसको parameter define किया Clifton. Print west snoring. And then dear sir, I wish to report that tiles are missing from the outside toilet roof. I'm printing these different columns in a different way. I can do this, or I can just use triple quotes basically to type this whole sentence in a way I want to see. And then regards, Sharfu. When I will run this thing, you will get a very surprising result that I would like to show you, inshallah. Let me open that command window. So the command window is here. I'm just going to paste it over here. Now when I'm going to run this thing, look at the result. 12, क्योंकि मैंने 12 spaces दी हुई थी, तो यहाँ उसने 12 दफ़ा स्पेस बार दबाकर स्पेस दिया हुआ है. यहाँ पर 25 दफ़ा दबाकर स्पेस बार दिया हुआ है. अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ to 1, it will move it over here, 1 space bar. अगर मैं करता हूँ उसको 100, it will move it to 100 space bars. इससे आगे करूँगा मैं I think 110 के ऊपर अगर मैं जाता हूँ, it will start breaking apart. Yes, right? So it will just move on to 110 space bar के बाद उसने इसको आगे push कर दिया. So I'll bring it back to 25. Just wanted to show you. And then %s12 dha, मैंने इसको spaces में lock किया and उसकी मैंने वैल्यू डिफाइन की. परसेंटेज इज बेसिकली स्पेसेस, जिसमें 25 स्पेसेस आनी चाहिए. एंड दैट्स हाउ आई डिड इट. सो यूज दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम काम करते हैं. इन द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस एग्जांपल, यू नो, व्हेन यू क्रिएट द वेरिएबल स्पेसेस बाय मल्टीप्लाइंग अ स्पेस कैरेक्टर 25 टाइम्स, ये हमने किया. एंड देन वी यूज दैट वेरिएबल इन द नेक्स्ट 3 लाइन्स टू अलाइन द टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द शेल. फिर हमने ये जो नेक्स्ट किया है कि भाई इनको अलाइन करो राइट ऑफ द उसमें. एंड यू कैन ऑल्सो सी द रिजल्ट प्रिंट स्टेटमेंट्स बिलो, और प्रिंट स्टेटमेंट्स बिलो जो है वो. अब नाउ मैं इसका एक और काम भी कर सकता हूँ. रादर देन डूइंग दिस, आई कैन ऑल्सो अलग अलग लाइन पे आए, मैं इनको थ्री कोड्स के साथ अलग लाइन्स में लिख सकता हूँ. आई कैन डू दैट एज वेल. दिस इज अ बल्की फॉर्म ऑफ द कोड, बट द पॉइंट इज के जस्ट गेट क्लेमेटाइज. आप थोड़ा सा ज़रा कंफर्टेबल फील करें अपने आप को इससे, इंशाल्लाह यू विल गेट द हैंग ऑफ इट. इन एडिशन टू यूजिंग मल्टीप्लिकेशन फॉर द अलाइनमेंट, यू कैन ऑल्सो यूज द स्क्रीन विद अनोइंग मैसेजेस. आप वो भी कर सकते हैं. बट द पॉइंट इज के दिस इज जस्ट लाइक अ स्मॉल स्निपेट. अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन या कोई ऐसी चीज़ लिखनी है, यू कैन राइट दैट एज वेल इंशाल्लाह. डाउन द लाइन हम ऐसी चीज़ क्रिएट करेंगे दैट विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ दीस थिंग्स ऑटोमेटिकली. राइट नाउ आपको सिर्फ इनर वर्किंग्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो काम करता है. फन स्टफ के लिए आप भी करके देखिएगा कि 1000 टाइम कराची को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमें बताइएगा इंशाल्लाह. नाउ लिस्ट वर्सेस स्ट्रिंग, दिस इज वेरी वेरी थिंग. लिस्ट बेसिकली आर मोर पावरफुल देन द स्ट्रिंग. जैसे शर्फू की लिस्ट जो है, सब्जी, फ्रूट, आलू एंड चाय. नाउ प्रिंट शर्फू लिस्ट एंड इट विल जस्ट शर्फू की लिस्ट आ जाएगी, सब्जी, फ्रूट, आलू, चाय. नाउ जो लिस्ट होती हैं, दे कैन बी मॉडिफाइड, दे कैन बी एडेड एंड दे कैन बी डिलीटेड. इसके आइटम्स आप कर सकते हैं. सो इसमें आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कोड के अंदर के व्हाट डू यू वांट टू डू. नाउ हमेशा याद रखिएगा कि जब लिस्ट का कैरेक्टर स्टार्ट होते हैं प्लेसमेंट, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. नाउ एंड यू विल गेट द हैंग ऑफ इट कि किस तरह से होता है, ये किस तरह से पिक करता है पाइथन इंशाल्लाह. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. नाउ क्रिएटिंग लिस्ट, अगर आप लिस्ट क्रिएट करते हैं तो मैंने लिखा शर्फू अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल्स सिंगल ब्रैकेट सब्जी, फ्रूट, आलू, चाय. नाउ अगेन ये कोड को आप जरूर कॉपी पेस्ट करके टाइप करके लिखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो. एंड देन प्रिंट शर्फू लिस्ट नंबर 2, यानी कि नंबर 2 का जो आइटम है वो आप प्रिंट करें. रिमेंबर जब मैंने आपको बताया था कि पहला जो वर्ड है वो सब्जी है, दैट्स 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2. जब मैं इसको प्रिंट करूँगा इट विल ओनली प्रिंट मी आलू, विच इज़ बेसिकली 0, 1, 2, बिकॉज मैं कह रहा हूँ शर्फू की लिस्ट को प्रिंट करो नंबर 2 में से. लेट मी शो यू दैट इज वेल. सो नाउ गोइंग बैक टू शर्फू लिस्ट सब्जी, फ्रूट, आलू, चाय. अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई प्रिंट शर्फू लिस्ट, इट विल जस्ट प्रिंट मी कि भाई 0 से 3 तक जितने भी हैं मुझे दिखा दो. तो इट विल 0, 1, 2, 3. So 0 to 3 na. So it will just print sabzi, fruit and aloo, the first 3 ones, right? Writing 0 to 3 is the same as saying show the items from the index position 0 up to but not including index position 3. So just show me 0, 1, 2 but don't show me 3 basically, because 0, 1, 2, 3. लेकिन just 0 से 2 तक दिखाएं, 3 को excluding 0. That's how it is understood over here.
राइट. सो यू कैन रन दिस कमांड एंड सी कि आप शरफों की लिस्ट देख सकते हैं कि नहीं देख सकते. यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई इट ऑन योर ओन एज वेल इंशाल्लाह. लिस्ट के अंदर आप लोग नंबर्स भी, जिस तरह भी हमने वर्ड्स को स्टोर किया था, it can store all sorts of items like numbers as well. So sum underscore numbers equals to 0, 1, 2, 5, 10, 20. They can also hold strings as well. जैसे कि which is which. I mean, you can store all kinds of things within a given list as well. Now strings and numbers example, यहाँ मैंने example दी हुई है जिसमें आप numbers and strings, y was 6 afraid of 7 because of 7, 8, 9. Right? Print numbers and strings. When you do that, it will just say y was 6 afraid of 7 because 7, 8, 9. These are ways of like writing down the code. यहाँ पर आपने जो वर्ड्स को स्टोर किया था, स्ट्रिंग्स जो थे वो सिंगल कोट में थे, राइट. जो नंबर्स हैं आपने उनको ऐसे स्टोर किया हुआ है. सो कीप एन आई ऑन दीज थिंग्स बिकॉज दिस इज़ हाउ थिंग्स आर डन. स्ट्रिंग्स को आप हमेशा जो टेक्स्ट होगा उसको आप हमेशा सिंगल कोट में स्टोर करेंगे एंड नंबर्स कैन बी स्टोर्ड एज इट इज़. दैट्स व्हाई इट इज़ पिकिंग अप लाइक वाई वाज 6 अफ्रेड ऑफ 7, 7, 8, 9. You can इंशाल्लाह you can try these things as well इंशाल्लाह. The other thing is within a list. You can also do that as well कि आप लिस्ट के अंदर एक लिस्ट रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर्स लिखा 1, 2, 3, 4 एंड स्ट्रिंग्स लिखा आई किक माई टो एंड इट इज़ अ सो, राइट. सो माई लिस्ट जब आप करेंगे, माई लिस्ट इक्वल numbers and strings and print my list कि आपने बता डिफाइन किया कि भाई नंबर्स ये हैं, स्ट्रिंग्स ये हैं. मेरी जो लिस्ट है my list equals numbers and strings. And when you print my list, it will just say 1, 2, 3, 4 and then I kicked my toe and it is so, and it will just pick up all of these things as it is. So again, you can merge the list as well, merge numbers and strings within a given list as well. एडिंग लिस्ट आइटम टू अ लिस्ट. लिस्ट का फ़ायदा एक ये भी है कि आप उसमें आइटम आराम से ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर्स 1, 2, 3, 4 स्ट्रिंग्स आई किक माई टू एंड इट्स सोर. माई लिस्ट आपने नंबर से स्ट्रिंग किया, यू हैव दैट लिस्ट, राइट. नाउ यू कैन ऑल्सो बिफोर एडिंग एन आइटम टू अ लिस्ट यू हैव टू क्रिएट लाइक मैंने यहाँ पे किया विजिट लिस्ट, स्पाइडर लेग्स, टोज ऑफ फ्रॉग, आई यूट, बैट वेग, स्लग बटर, स्नेक डैंड्रफ फॉर एग्जाम्पल. आफ्टर एडिंग आइटम्स टू अ लिस्ट वी अपेंड. ये अपेंड कमांड यूज़ होती है, डॉट अपेंड कमांड. दिस इज द की थिंग, राइट. सो इफ यू वांट टू ऐड समथिंग यू हैव टू यूज़ द डॉट अपेंड कमांड टू मेक श्योर कि उसमें पिकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगेन इसको अपने इस पर ट्राई कीजिएगा अपने कमांड लाइन के ऊपर सो दैट यू कैन गेट द हैंग ऑफ इट. मैंने वैसे ही पूरा टाइप किया उसके अंदर एंड देन विजिट लिस्ट डॉट अपेंड बेयर बर्ड. मैंने इसका कि मुझे इसमें बेयर बर्ड भी डालना है एंड देन व्हेन आई से प्रिंट विजिट लिस्ट it will get me the result as well. Now let me show you quickly as well just to make sure कि आपको समझ आए. So going back to the command line, I'm just going to type these things and just say ये मेरी list है. Okay, I'm going to run. It shows me the list. Now I would like to add something over here in the list. So what I can do is I can add another code line over here which says, so add करने के लिए मैं wizard underscore list dot append burp bear burp, right. Now when I run this command, it will show me the result by adding that thing in there as well. Now remember जब आप कोड रन करते हैं, this is a simple example, जब आप कॉम्प्लेक्स कोड्स करेंगे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में, you need to know these things because आप जाके कोड में ये लाइन कहीं और लिखी हुई होगी, you can't go in there and make these changes over there, right. So you can add this line and say कि भाई मुझे एक नया फीचर लिस्ट में डालना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरी जो भी है, या मुझे एक नया algorithms में डालना है. So you can append the list of the algorithms or whatever the case is by using the append command. That's why it is important कि आपको ये चीज़ें समझ आए इंशाल्लाह. Again ये बहुत बच्चों वाली एग्जाम्पल्स हैं, हमने इसी तरह रखना है. प्राइमर में बहुत आसान चीज़ें हैं, आगे जाके इंशाल्लाह हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इंटेंसिटी बढ़ेगी तो वो होगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. आहिस्ता आहिस्ता जिस स्पेस पे आप करना चाह रहे हैं आप उस पर करते रहें इंशाल्लाह. सो नाउ मूविंग अहेड. नाउ जो मैंने आपको लिस्ट दी थी उसी में आप ये चीज़ें ऐड करें एंड देन शेयर द रिजल्ट्स विद अस कि कैसा रिजल्ट आया, प्रिंट आउट कैसा आया उसका, प्रिंट कैसा आया उसका. सेंड अस दोज रिजल्ट थ्रू zone@nafay.com. वी वुड लाइक टू सी क्या है, किस तरह से आ रहा है. अगेन हमारा पोर्टल अभी बन रहा है इंशाल्लाह, जैसे पोर्टल कंप्लीट होगा तो उसमें और दूसरी चीज़ें भी इंशाल्लाह आएंगी जिसमें आप ये सब चीज़ें ऑनलाइन हमारे पोर्टल पे कर सकेंगे इंशाल्लाह. फॉर नाउ यू कैन ईमेल इट टू अस. नेक्स्ट थिंग इज रिमूविंग आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट. जिस तरह हम अपेंड यूज़ करते हैं ऐड करने के लिए, इसी तरह हम डिलीट डेल यूज़ करते हैं विच इज़ शॉर्ट फॉर डिलीट, चीज़ें डिलीट करने के लिए. वही सेम एग्जाम्पल है आपके लिए. जैसे हमने ये सब लिखा हुआ था, स्पाइडर लेग्स, टो ऑफ फ्रॉग, आई न्यूड, बैट विंग, स्लग बटर, व्हाटएवर द केस इज. डिलीट डेल विजिट अंडरस्कोर लिस्ट 5. तो आप जो है 5वां आइटम जो है वो डिलीट कर देना. नाउ एग्जाम्पल, कीप दैट इन माइंड कि जो फर्स्ट सिंगल कोड में लिखा हुआ है स्पाइडर लेग्स, दैट्स 0. So that's how Python distinguishes it, right? जब ये भी हम लोग जब लिस्ट कर रहे थे, शरफों की जो लिस्ट देख रहे थे, तो this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. So लिस्ट में जो 6th आइटम है, 5th आइटम है, वो आप गायब हो जाएगा. Which actually it is 6th, but it will be removed as 5th. Actually refers to 6th item in the list. 1, 2, 3, 4, 5, 6. But जब Python पढ़ेगा तो वो Python इसको स्पाइडर लेग को इंस्टेड 1 के वो 0 पढ़ेगा. 0, 1, 2, 3, 4, 5, and it will just remove this one. So get out and see the result कैसा आता है. लिस्ट के अंदर आप अर्थमेटिकली चीज़ें भी डाल सकते हैं. यू कैन जॉइन द लिस्ट टुगेदर बाय यूजिंग द प्लस, लाइक लिस्ट 1 is 1, 2, 3, 4, लिस्ट 2 is
Like when you say list 1 plus list 2, it will give you a very interesting result as well. So दिखाएगा हमको कि आपका कैसा रिजल्ट आता है. आप लिस्ट 1 और 2 कर सकते 3 के बराबर. You can do that as well. You can go a list within a list within a list as well. It's all defining the parameters, so you can do that as well inshallah. So try this and tell us कि आपको कैसा लगा, आप कहाँ तक पहुँचे. You can, and we can multiply a list by number as well. For example, to multiply list 1 by 5, you can do this. List 1 equals 1 and 2. Then print list 1 equals multiply by 5. So list 1 की जो वैल्यू थी was 1 and 2, लेकिन जब उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 and 2 को 5 दफ़ा दिखाएगा. 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, 1 to. This is like 5 times. उसने वही उसको मल्टीप्लाई कर दिया. This is actually telling Python to repeat list 1 5 times, resulting in बार बार वही कर रहा है. इसी तरीके से अगर आप लिस्ट में लिखें पाकिस्तान like कराची लाहौर multiply by 5, उसे कराची लाहौर कराची लाहौर कराची लाहौर कराची लाहौर, we keep on repeating it 5 times. So इसको आप करके देखिएगा इंशाल्लाह. It's very fun. हमारा मकसद ये है कि अभी आपको बेसिक चीज़ें पता चलें before we go into the details इंशाल्लाह. On the other hand, list code division, divide या subtract नहीं कर सकते. It will give you error messages. So if you try list 1 equals 1 and 2 and list 1 divided by 20, it will give you an unsupported operation type. You know, it will just say कि भाई operand ये हम recognize नहीं करेगा उसको, because it's not possible to do that. It doesn't make any sense कि भाई किस तरीके से divide करें 1 and 2 को, किन चीज़ों से divide करें. So it will never work out. Minus और division list में नहीं कर सकते, addition और multiplication कर सकते हैं आप. Remember that. Again, this is another example कि अगर हम माइनस करने की कोशिश करेंगे, it will throw out an error message. So you can try that as well, inshallah. It's just common sense that, you know, it's not possible to minus these numbers. I mean, computer जो है, आप चाहे जितना smart AI बना लें, machine learning, deep learning बना दें, it is dependent on the parameters you define, right? And mathematically वो parameters पे चलता है, and these can be only defined by what you know, the capability. So इसकी capability इतनी नहीं है कि वो इससे और आगे जा सके, and it applies common sense as well. So, well, joining lists with plus and repeating lists with multiplication are straightforward, right? लेकिन as मैंने आपको बताया कि भाई multiply this list by 3, you can imagine writing a list of all the items 3 times, right? But अगर आप उसको बोलें कि भाई आप उसको divide कर दें 1 to 3 into, वो कैसे करेगा? I mean, it will be very difficult for it. क्या वो इस तरह से करे 1 to 3 को 4 5 6 divide करे? मतलब कि you know, there is no simple answer for it कि भाई किस तरीके से करे. It needs concrete parameters. आगे जाके जब आप मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एआई में काम करेंगे इंशाल्लाह, जब आप टेंसर फ्लोर दूसरी चीज़ें यूज़ करेंगे, और साइबर सिक्योरिटी में भी जब आप काम करेंगे ऑफेंसिव पाइथन में, फोरेंसिक पाइथन में, उनके पैरामीटर्स को समझना बहुत ज़रूरी है. अगेन देखिए, हमारा मकसद ये नहीं कि हम आपको प्रोग्रामर नहीं बना रहे. नो, आप प्रोग्रामर नहीं बन रहे. आप सिर्फ इतना हम आपको इतनी पाइथन सिखा रहे हैं कि आप मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एआई और साइबर सिक्योरिटी में काम कर सकें. अगर आपको वेब डेवलपर बनना है, देयर इज अ सेपरेट कोर्स फॉर दैट. बट येस, दिस कोर्स विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पाइथन, बट आवर गोल इज नॉट लाइक दैट. Again, numbers define करना, it's very easy. We're going to go, you know, here we define the variable fibs as the number 0, 1, 2, and 3, and then as with the list, we print them item index positions, right? Tuple. So this is basically tupling. So let's go back to the tuple. I think yes, a tuple is like a list that uses parentheses, as in this example, like fibs 0, 1, 1, 2, 3, right? Print fibs, like third वाला मुझे tuple दिखाना है, तो 0, 1, 2, 3, and it will just get me the third position, which is 2, right? So that's how parentheses के अंदर define करके आप tuples लिखते हैं. Here we define basically, let me think of a easy definition of tupling. You know, it's like a tuple is like a list that uses parentheses, right? That's the best thing I can think of. The main difference between a tuple and a list is that tuple cannot change once we've created it. That's the key thing. कभी-कभी आप ऐसी list create करते हैं इसको आप ना change नहीं करना चाहते. You need it to be constant. That can be defined as a tuple, right? List can be modified, can be added, can be multiplied, right? It can't be subtracted. You can delete it, yes, so on and so forth. But in the tuple case, you can't modify the values. The values will remain as it is. If you want to do that, it's just going to throw out an error message. Like this here, I'm इसको कह रहा हूँ कि भाई जो fibs की value है वो 0, 1, 1, 2, 3 आप उसको अली कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई define करो fourth value and you know 0 equals to 4. आप 0 जो यहाँ पर आ रहा है उसको 4 से change कर लो and print fibs 3 और आप करके दिखाओ. It'll just throw out an error message. Tuple object does not support item assignment. You can't reassign the item. It's done. If you have to do it, you have to do it over here. You can't change it. So there are examples of tuples inshallah down the line. हम उसको देखेंगे कैसे आते हैं. अभी हम लोग assignments भी करेंगे inshallah. So why would you use a tuple instead of a list? Basically because sometimes it is useful to use something that you can never change. If you create a tuple with 2 elements inside it, it will always have 2 elements inside. That's the key thing. चीज़ें ऐसी examples आगे आएंगी जिसको आप कभी change नहीं करना चाहेंगे. That's a tuple. Python maps. In Python, a map, also referred to as a dictionary, sort of like short of dictionary, dict, is a collection of things like lists and tuples. Maps बहुत important है. The difference between maps and the list or tuples is that each item in a map has a key. This is like a primary key and a corresponding value. For example, इसमें एक बड़ी example मैंने लिखी हुई यहाँ पर. Like favorite sport, creating a map in Python, right? Favorite sport है अली का football, उमर का है basketball, उस्मान का है baseball, अबू बकर का है netball, फातिमा का है badminton, and फैजान का है rugby. When I say print favorite sport, it will just print इन तमाम के नाम लिख देगा, right? Now if I would like to change a value, modifying a value in a map, how can we do that? Now if we store the same information in a map with the person's name as the key, अगर हमें बताना कि भाई ये अली जो है is the key person name
और उसका जो भी गेम है हम ये गेम चेंज कर सकते नहीं, तो वो कैसे करेंगे? उसको करने के लिए एक्सक्यूज़ मी उसको करने के लिए आसान तरीका है कि आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करें एंड देन यू डिफाइन कि भाई अली कोलन फुटबॉल, उमर कोलन बास्केटबॉल, उस्मान कोलन बेसबॉल, अबू बकर कोलन नेटबॉल, फातिमा कोलन बैडमिंटन एंड फैज़ान कोलन रग्बी। अब अगर मुझे इसमें कोई चेंजेस करनी है तो इट्स वेरी सिंपल, वी यूज़ कोलन्स टू सेपरेट ईच की फ्रॉम इट्स वैल्यू। ये जो ये की है इसकी वैल्यू फुटबॉल है। नाउ कैन नॉट बी चेंज, द वैल्यू कैन बी चेंज, राइट? दैट आइटम्स इन अ मैप आर इनक्लोज इन ब्रेसेस, राइट? सो वी क्लोज दैट कि भाई ये सारे मैप के अंदर आइटम्स हैं। नाउ अगर मुझे एंड नॉट पेरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट्स, हम पेरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट्स इसमें यूज़ नहीं करते। दैट इज़ अ मैप। व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग ब्रेसेस वी कॉल दैट बेसिकली एज अ मैप। यहाँ पर हम लोग ट्रिपल कोट्स या ब्रैकेट्स ये यूज़ नहीं कर रहे, पेरेंथेसिस यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर ब्रेसेस यूज़ कर रहे हैं, कॉल दिस ब्रेसेस। Now print favorite sports, Ali का क्या favorite sport होगा? It will just print as football. Now if I want to make a change, deleting a value in the map, I can just say delete favorite sports Ali. And when I say print sport, Ali उसमें से गायब हो चुका होगा. You can try that inshallah. You try to copy these commands in examples and see what happens. And try that inshallah. Replacing a value, when you say favorite sport Ali, कि मुझे फैज़ान का change करना है to cricket, I just add this value as favorite sport Faizan equals cricket. When I now print it, it will get me a different message inshallah. So let me try this and do this one for you inshallah to show you all the examples. And let's try this inshallah. You can copy paste it over here. ये जो text लिखा हुआ है ये इस तरह से भी हो सकता है. So don't worry about that कि भाई ये ऐसा क्यों नहीं आ रहा और फैसल भाई ने यूँ क्यों लिखा हुआ है. Because मैं जब तस्वीर लेता हूँ उसकी तो उसमें पूरा आता नहीं है. So you can type it like this. Then the result will be the same. So don't worry about it, right? Okay. So please इसमें परेशान मत होइएगा. You can run it like this and it will show you the same value. अगर मैं दूसरे तरीके से रन करता हूँ, it will still show me the same value. So don't worry about that inshallah. So now if I say कि यार मुझे एक इसकी वैल्यू हटानी है या उसको डिलीट करना है, I say delete favorite underscore sports and then I say अली को आप यहाँ से हटा दें, right? And when I run it, अली गायब हो गया यहाँ से. Now if I say इसमें आप चेंजेस करें थोड़ी सी कि फेवरेट स्पोर्ट जो फैज़ान है अली को रहने दें, डोंट डिलीट इट, मगर जो फेवरेट स्पोर्ट फैज़ान है उसको आप चेंज कर दें, FAVORITE स्पोर्ट, and I use and then I define it as equals cricket, right? And now when I run it, Faizan ka sporting rugby tha, but when I run it now, it will be Faizan cricket, right? So these are the examples that you have to understand and practice again. Please घबराइएगा नहीं. This is very easy stuff. हम बहुत आराम से लेके चल रहे हैं and we'll keep on this pace until we pick it up inshallah. So you can always repeat them, keep on practicing inshallah. हम जब हमारा पोर्टल तैयार हो जाएगा तो उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी आएंगी इंशाल्लाह. So आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी होगी इसको प्रैक्टिस करने के लिए. याद रखिएगा कि आप रिप्लेस कर सकते हैं. Working with maps is kind of like working with lists and tuples, except that you can't join maps with the plus operator. If you try to do that, you will get an error message. अगर आप दो maps create करें और अगर उनको join करने की कोशिश करें, map 1 and map 2, and then try to join them as map 3 equals map 1 plus map 2, print आप करेंगे नहीं होगा वो. You will get an error message. Again, please घबराइएगा नहीं, बहुत आराम से लेके चलें इसको, अपना टाइम लें, कंडीशन करें अपने आप को. वी आर टेकिंग इट वेरी स्लो, वी विल पिक इट अप इंशाल्लाह. जस्ट टेक योर टाइम, जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट. पाइथन जो है वो बहुत आसान ज़बान है एज़ कम्पेयर टू C++, जावा और दूसरी लैंग्वेजेस के. ठीक है, हमारा मकसद ये नहीं कि हम आपको डेवलपर बनाए, नहीं, हमारा मकसद ये कि हम आपको इतनी पाइथन सिखाएं कि आप आगे जाकर दूसरे काम इंशाल्लाह अपने जो डिफरेंट मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AI में या साइबर सिक्योरिटी जो आप काम करेंगे उसमें आपको आसानी हो काम करने में. सेंटेक्स समझना ज़रूरी है, सेंटेक्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, इनकी डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है. दैट इज़ द होल गोल इन प्राइमर. एंड एज वी गो इन अल्फा एंड बेटा एंड गामा एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह और इंप्रूव होती चली जाएगी. जज़ाकल्लाह खैर. अगर आपके कोई सवाल हैं zone@nafay.com पे आप हमें भेज सकते हैं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.